Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simplifying UPSC with Ease with me Arpita Sharma, and today we are going to start with the book list for UPSC CSE GS paper 2 mains. In mains we all know GS paper 2 is one of the most important paper. Why? Because the syllabus is very dynamic, not static but dynamic. There are static books for covering this paper, but the particular questions which are coming in GS paper 2 are very dynamic, right? The syllabus is static, but the questions are dynamic. So you have to very seriously focus in this paper, right? Why? Because the questions 90% of them are current affairs oriented. तो ये जो जीएस पेपर 2 का पेपर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. सिलेबस तो बहुत स्टेटिक है इसका, राइट? बट इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ही डायनामिक आते हैं. यानी कि 90% जो है वो करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं. तो अगर आपकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. इफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैटिक पेपर एंड द करंट अफेयर्स पोर्शन इज स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन स्कोर वेरी वेल, रियली वेल in this paper. So let's start with the strategy of GS paper 2, the book list which is required for GS paper 2. Now there are 100 books in the market for GS paper 2. अगर GS paper 2 की बात करें तो मार्केट में 100 से ऊपर बुक्स आपको मिल जाएंगी. But we have to keep our resources limited. हमें तो अपने resources limited रखने हैं, right? So we have to just go into 2 to 3 books. We have to just keep those 2 to 3 books and we have to revise them 4 times before mains. राइट तो हमें अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं. हर शॉप पे जाकर आपको 100 से ऊपर बुक्स मिल जाएंगी जीएस पेपर 2 के लिए, बट हमें वही 2 से 3 इंपॉर्टेंट बुक्स अपने पास रखनी है और उनको रिपीटेडली 3-4 बार रिवाइज करके ही मेंस में जाना है, राइट? वन रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. एक किताब की कम से कम 2 या तीसरी रीडिंग तो आप करके ही जाओ, राइट? Now let's start with the syllabus first. As we look into the UPSC mains syllabus, you can see there are compulsory papers, English and any one Indian language. Then 25% marks are required in these two papers to qualify for the mains. Basically आप चाहते हो अगर आपके बाकी के पेपर्स चेक हो मेंस में तो आपको सबसे पहले इन दो पेपर्स में कम से कम 25% नंबर या उससे ज्यादा लाने पड़ेंगे. If you do not score 25% or plus in these two papers, rest of the papers will not be checked. अगर आप इन दोनों पेपर में ही 25% से ऊपर नहीं लाते तो ये बाकी के पेपर्स आपके चेक भी नहीं होंगे, भले ही आपने कितने अच्छे से लिखा हो. Right? Then there is essay paper. We are going to deal with this paper separately. I am going to make a separate strategy and book list video on this paper. Essay paper को कैसे prepare करना है इसके ऊपर एक separate video बनाई जाएगी. Then journal studies, there are paper number 1, paper 2, paper 3 and paper 4. Paper 1 we have discussed. ये तो हमने discuss कर लिया. We have made a separate video on this paper, right? The book list which is required. Paper 2 we are going to study today, right? So let's start with the syllabus. Over here this is the syllabus. You can also take a screenshot of it. आप इसका screenshot भी ले सकते हो. Today we are going to study GS paper 2, right? Now in GS paper 2 the topics are governance, constitution, welfare initiatives, social justice and international relations. Out of these topics, 2 are static topics and rest of them are dynamic topics, which means 2 are very static. You have to learn them, retain them, revise them, and the rest of the paper, the syllabus, it is current affair based. So which are the 2 topics which are static? Governance, constitution. These are you can put them together, it becomes one, right? Governance और constitution को आप एक साथ रख सकते हो, right? And then international relations, the second topic. These 2 are dynamic. Constitution जो है आपका संविधान है वो बहुत ही static topic है, राइट? आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, राइट? एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इट इज डायनामिक ऑल्सो बट इट इज स्टैटिक ऑल्सो. स्टैटिक वेयर in terms of agreements, pacts, world institutions, world intergovernmental bodies,
मिलिट्री एक्सरसाइजेज एटसेट्रा। इंटरनेशनल रिलेशन डायनामिक भी है, स्टैटिक भी है, बट मोस्टली स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर के बारे में लर्न करना है, कब स्टैब्लिश हुए थे, क्या एम है, क्या एजेंडा है, किस तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं दोनों ही नेशंस के बीच में, राइट? तो इस कैसे रिलेशंस हैं, हिस्टोरिकल रिलेशंस क्या है, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ना है। यू हैव टू आल्सो स्टडी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू व्हेन इट कम्स टू द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्रीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से अपने फिंगर टिप्स पे लर्न कर लेते हो तो आप समझ लो कि जीएस पेपर 2 का 50% आपने पोर्शन कवर कर लिया। इफ दीज टू टॉपिक्स यू कवर देम वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, राइट, सो you can assume that 50% of the syllabus you have covered very nicely. Rest of the topics like welfare initiative, social justice, these topics are current affair oriented. Welfare initiative, social justice, ये जो topics है ये तो current affairs oriented है, right? Daily you have to read the Hindu newspaper, PIB, RSTV, you have to watch, it's a must. ये तो बिल्कुल ही must है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, right? It is must. So you cannot miss RSTV at any cost. The debates in RSTV are very important for governance point of view. तो जो debates आती हैं बहुत ही important है, उसमें से एक या दो question हर साल पूछा जाता है. If you are not able to watch the debates, then you can watch the summary of those debates on Insights. आप Insights on India के Insights के site से जाकर, वेबसाइट पर जाकर इनकी समरी आराम से पा सकते हो, आसानी से पा सकते हो, राइट? So the Hindu, PIB and the summary you can find over here. Welfare initiatives, all the policies, programs, schemes framed by the government of India, right? You have to study them obviously from the Hindu daily reading of the Hindu newspaper, PIB, and if you cannot make a note of the Hindu newspaper because you are a working professional, then you can all obviously go to Insights, right? आप Insights की magazine से भी पढ़ सकते हो, but I will recommend daily reading of the Hindu newspaper. चाहे आप working professional हो, इतना time तो आप निकाल सकते हो कि आप the Hindu newspaper की summary पढ़ लो, right? Summary means आप फटाफट से ऊपर से एक रफ रीडिंग दे दो हिंदू न्यूज़पेपर को। और अगर आप इतना नहीं दे पा रहे हो तो एडिटोरियल मिस मत करना, एडिटोरियल सिर्फ पढ़ लो, बाकी आप जो न्यूज की समरी है वो इनसाइट से भी पा सकते हो, राइट? और यू कैन वॉच माई लेसन ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑल्सो। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप 10 to 15 मिनट्स में मेरे लेसन को भी देख सकते हो, वहां से भी आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की समरी मिल जाएगी, बट एडिटोरियल खुद पढ़ना, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बुक लिस्ट। अब इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट देख लेते हैं, विच बुक्स आर रिक्वायर्ड. But before that, there are some tips to enrich your answers in mains, GS paper 2 especially. First of all, whatever answers you are writing, try to substantiate your answers with current affairs. अगर आपको स्टैट्स भी लर्न नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप जो डेटा है या जो स्टैट्स है जो आपका करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज में जितने भी स्टैट्स या जितने भी आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं वो आप एग्जाम तक लर्न नहीं रख पाओगे. इफ यू थिंक दैट यू विल वोंट बी एबल टू रिटेन द फैक्ट्स, द फिगर्स, द स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एनी न्यूज till your exam, right? Then don't worry. At least substantiate your answers with current affairs. करंट अफेयर से अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट करो अगर आप ग्राफ्स वगैरह नहीं बना सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात हो रही है, राइट? तो आप उस केस में भी आप अगर स्टैट्स याद नहीं है तो आप करंट अफेयर से भी उसको रिप्लेस कर सकते हो. Now use the names of expert committees to suggest solutions. In the conclusion of the answer, when you suggest the way forward, you can use the name of expert committees. Gadgil committee report, right? तो ऐसे आप कमिटी रिपोर्ट्स के अगर नाम कंक्लूजन में अगर आप अपना सोल्यूशन कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड बता रहे हो आगे हम क्या कर सकते हैं इस चीज में, इस स्थिति में सुधार लाने के लिए, तो आप एक्सपर्ट कमिटीज के नाम भी सजेस्ट कर सकते हो. बट फेक कंक्लूजन मत लिखना, किसी भी एक्सपर्ट कमेटी का नाम बना के लिख दिया, ऐसे नहीं. अगर आपको याद है कि किस, जैसे फॉर एग्जांपल गडगिल आप कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहे हो, राइट? तो उसमें जो भी सोल्यूशंस उन्होंने दिए हैं आप उसके सोल्यूशंस को यूज करके उस कमेटी का नाम मेंशन करके अपना कंक्लूजन बना सकते हो. यूज द डायग्राम्स और माइंड मैप्स एज मच एज पॉसिबल बिकॉज दे शो हाउ एनालिटिकल एंड हाउ वेल इक्विप्ड विद फैक्ट्स यू आर. डायग्राम्स अगर आप तैयार करते हो, बनाते हो किसी भी आंसर में, तो ये पता चलता है कि क्रिएटिविटी, एनालिटिकल क्रिएटिविटी कैसी है, right? Then answers on multiple dimensions, social, political, economic, cultural aspect etc. For example, अगर modern women के ऊपर कोई question आ जाता है तो आपको हर aspect से वो आंसर फ्रेम करना होगा. Use quotes as much as possible even in GS paper 1, 2 and 3 papers. GS paper 1 is related to history. You can use the quotes of Nelson Mandela
और महात्मा गांधी, राइट, जवाहरलाल नेहरू, आप इन पर्सनालिटीज के कोट्स यूज कर सकते हो। डू अंडरलाइन टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट स्टफ। देखो, दो पेन से लिखने की जरूरत नहीं है कि एक आंसर मैं ब्लैक से लिखूंगा, एक ब्लू से लिखूंगा, ऐसे नहीं करना। जो भी इंपॉर्टेंट लग रही है लाइन आपको, आप चाहते हो एग्जामिनर उस लाइन को पढ़े, उसको सिंपली अंडरलाइन कर दो। डू नॉट यूज ब्लैक ब्लू पेन्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन इन वन आंसर, नो। इफ यू थिंक certain line is important and you want examiners attraction and attention towards that particular answer, just underline the phrase or line, राइट, डबल अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो इंपॉर्टेंट स्टफ को, काफी होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जीएस पेपर 2 विच यू मस्ट कवर, देन वी विल अंडरस्टैंड द बुक लिस्ट। पहले ये समझ लेते हैं कौन से टॉपिक्स आपको कम से कम 2019 एंड 20 के मेन से पहले पढ़ने हैं, उसके बाद हम बुक लिस्ट देखेंगे। In polity and governance, you have to study the DPSP very carefully and fundamental rights very carefully, because the cow slaughter issue was going on, right? 2018 में पूरा साल cow slaughter का issue सामने था, right? Then fake rumors जो होते हैं spread होते हैं social networking sites के through, वो भी न्यूज में था, ठीक है। तो आपको इस केस में मॉब वायलेंस भी न्यूज में था, इस केस में आपको DPSPs भी पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो सिटीजन्स नागरिक की होती है अपनी कंट्री की टुवर्ड्स, वो भी पढ़नी है, राइट। Then Article 377 was in news in 2017 and 18 and transgender rights. So this you have to study. मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो पढ़ने हैं। These are the important topics which you have to focus on because 2 to 3 questions are 99% expected from these topics. 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का से एक्सपेक्टेड है इन टॉपिक्स में से। Judicial appointments and National Judicial Appointments Commission you have to study. Good governance, what is the concept of e-governance? Digital India, e-governance क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको पढ़ना है। मिस्टर मोदी के वर्किंग टाइम पीरियड में ई-गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ है। देन पॉवर्टी एस्टिमेशन, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कैनेडाज कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूकेस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के, कैनेडा के, यूएस और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना है। Then international relations, this topic is very important. You all know the Rafale issue going on, right? 2 questions are expected from that particular topic. 2 questions तो 110% expected है उस topic से। India Central Asia relations, India Israel relation, India Iran, India Qatar, India Africa, US, EU relations, Brexit का issue कितना ज़्यादा famous हुआ अभी लास्ट के कुछ महीनों में, right? तो आपको EU और इंडिया के रिलेशंस के बारे में पढ़ना है, इंडिया रशिया रिलेशन स्पेशली, एंड राइट नाउ देयर इज अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, सो यू हैव टू फोकस ऑन इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तान फ्रेंड चाइना, राइट। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। देन FATF, अजहर मसूद का कितना सारा इशू न्यूज में चल रहा है, FATF, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, व्हाट इज इट, फोकस ऑन दैट। नाउ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ARC रिपोर्ट्स। सेकेंड ARC रिपोर्ट तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बट सी डू नॉट गो थ्रू द इंटायर रिपोर्ट, जस्ट गो थ्रू द समरी। आपको जो रॉ रिपोर्ट है ARC की वो नहीं पढ़नी है, इसमें बहुत लंबी है, आप कोई PhD नहीं कर रहे हो, राइट, यू आर नॉट डूइंग PhD in polity, so do not go through the full ARC report, just go through the summary. Now which report you have to study? Report 1 right to information, report 3 crisis management, ARC report 4 ethics in governance, report 8 combating यानी कि fighting terrorism, report number 11 e-governance, report 12 citizen centric administration, that is focusing on citizens, report 14 strengthening financial management system. From where you have to read the summary, I am going to give you the book, the particular website, and I am going to mention the website in the description box below the video, where you can click and go directly towards the वेबसाइट। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट भी दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जा सकते हो। आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक टू परचेज द इंपॉर्टेंट बुक्स ऑल्सो, यू कैन परचेज दोज बुक्स थ्रू दैट पर्टिकुलर लिंक। Now, first important topic is Indian Constitution and Polity in GS paper 2. Here you have to, study about the Indian Constitution, historical underpinnings, then various other features, right? So, which books are necessary? First is the Introduction to the Constitution of India, D.D. Basu. This book is very important for mains, not for prelims. ये book prelims के लिए नहीं है, ये mains के लिए है सिर्फ। NCERT of Polity class 9th, 10th and 11th only. Then ARC's 13th report, second ARC की 13th report है Organizational Structure of Government of India. ये आपको पढ़ना जरूरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है।
Then ARC, second ARC, sixth report on local governance, panchayat and panchayati raj, municipalities, etc. At that level, what kind of governance is there? पंचायत के लेवल पर, म्यूनिसिपैलिटीज के लेवल पे किस तरीके की गवर्नेंस होती है. हिंदू न्यूज़पेपर ऑब्वियसली, राइट, डेली यू हैव टू रीड देम. एंड आई एम अज्यूमिंग दैट प्रीलिम्स के टाइम पे आपने लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी तो आराम से खत्म की होगी, राइट. यू मस्ट हैव कंप्लीटेड एम लक्ष्मीकांत ड्यूरिंग द प्रीलिम्स टाइम. सो एम लक्ष्मीकांत यू हैव टू रिवाइज, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू लक्ष्मीकांत. देखो प्रीलिम्स के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी है, बट मेंस के लिए आपको सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ने हैं. फॉर प्रीलिम्स यू हैव टू रीड द होल बुक, बट फॉर मेंस ओनली दीज टॉपिक्स यू हैव टू रीड. Salient features of constitution, then borrowed features of Indian constitution, from which part we have borrowed from which country, parliamentary form of government, federal features, fundamental right, DPSP, emergency provision. Only these questions you have to, these topics you have to study from M Lakshmikant for GS paper 2. GS paper 2 के लिए सिर्फ यही topics आपको M Lakshmikant से पढ़ने हैं, बाकी rest of the book DD Basu you have to study. Then second ARC report की 7th report, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आरपीआई एक्ट आपको पढ़ना है, राइट. दिस इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन आरटीआई की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा, या आपको समरीज मिल जाएंगी इनसाइट से इसकी. यू कैन फाइंड द समरी ऑफ दिस एक्ट ऑन इनसाइट्स, राइट. आपको इनसाइट्स पे इसकी समरी मिल जाएगी. ओनली दैट 1 पेज समरी इज इनफ, सिर्फ वो 1 पेज की समरी पढ़नी है. देन 12th ARC रिपोर्ट, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड 11th प्रमोटिंग ई गवर्नेंस. Now, when we look at the books, these are the books. For English medium students, DD Basu, Introduction to the Constitution of India, this book you have to purchase, and 5th edition of Indian Polity you have to keep with yourself. For Hindi medium student, both of these books are available in Hindi also. ये दोनों ही किताबें हिंदी में भी अवेलेबल हैं. तो आप भारत की राज्य व्यवस्था 5th एडिशन पढ़ सकते हो एम लक्ष्मीकांत का, और भारत का संविधान एक परिचय, ये है DD बासु की किताब हिंदी में, राइट. बोथ ऑफ दीज बुक्स, द लिंक्स आई एम गिविंग बिलो द वीडियो के नीचे मैं इन दोनों ही किताबों का लिंक दे रही हूँ, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो. नाउ फ्रॉम वेयर टू रीड द ARC रिपोर्ट समरी. ARC रिपोर्ट है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी है, कमिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, राइट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उस पर रिकमेंडेशन देती है ये रिपोर्ट. ARC रिपोर्ट, इट्स अ कमिटी, राइट. ARC इज अ कमिटी which publishes report of which has a recommendation and suggestion to improve the working of the government and public administration. The reports by the commission are called ARC reports. ये जो ARC commission है, ये जो reports publish करती है उसे ARC report कहते हैं. The first report was headed by Morarji Desai. Remember this for prelims. पहली ARC report Morarji Desai ने publish की थी, right? And second ARC was constituted by Veerappa Moily, right? Now from where you can find the summary. आपको reports नहीं पढ़नी है. Do not read the reports. Okay? That is very complex task. इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, PhD नहीं करना है, राइट. सो आइदर यू कैन गो टू विजन्स वेबसाइट, या तो आप विजन्स की वेबसाइट पे चले जाओ. आई एम गोइंग टू गिव द लिंक बिलो द वीडियो. इन दोनों ही समरी रिपोर्ट्स का मैं लिंक आपको नीचे वीडियो में नीचे दे दूंगी, राइट. So either you can go read the Visions ARC summary or Insights ARC summary. Both are very good. दोनों ही बहुत ही अच्छी है. I will recommend Visions ARC summary. मैं आपको Vision की ARC की summary recommend करूंगी, right? Then comes international relations. International relations is divided into 3 parts. India and its neighborhood relation. भारत का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ रिश्ता कैसा है. Bilateral and regional global groupings. जो भी organizations बनती है ना, groupings बनती है. इंडिया की मान लो सार्क ऑर्गेनाइजेशन हो गई, G20, G7 ग्रुप हो गया, राइट. ऑल दीज ग्रुपिंग्स. एंड थर्ड पार्ट इज इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज, फॉर एग्जांपल WTO, IMF, UNO. ये जो छोटी छोटी ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये आपको पढ़नी है. नाउ व्हाट आर दी सोर्सेज फ्रॉम विच यू हैव टू स्टडी देम. अब कहाँ से पढ़ना है? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर दैट. Challenge and Strategy, Rethinking India's Foreign Policy by Rajiv Sikri. ये बुक हाईली रिकमेंडेड है बाय मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ऑल्सो, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिकमेंड देम एज योर टीचर. आपके टीचर होने के नाते मैं भी आपको यही बुक रिकमेंड करूंगी. दिस वन बुक विच कॉम्प्लीमेंटेड विद द हिंदू न्यूज़पेपर एंड MEA वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट.
दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। अगर आपको भारत और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे रिश्ते हैं भारत के, ये अच्छे से पढ़ना है, तो ये एक किताब राजीव सीकरी जी की बहुत अच्छी किताब है, ये आप खरीद सकते हो। MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट रोज आप देख सकते हो, रात को सोने से पहले देख लो क्या अपडेट्स हैं, राइट, व्हाट न्यू पैक्ट्स अग्रीमेंट्स इंडिया हैज साइंड विद द अदर कंट्री, या बाहर की कंट्री से कौन से राजा या कौन से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर यहाँ विजिट पर आए हुए हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर डेली यू हैव टू रीड। Then bilateral and regional global groupings, right, or agreements signed by India and the other country. You can read them from the Diplomat website. Diplomat की website भी है और magazine भी आती है। अगर magazine नहीं खरीदनी, then you can go towards the website. If you don't want to purchase the Diplomat magazine, then you can visit the website. That will be very, easy. Website पढ़ना बहुत easy रहेगा, right? Then Ministry of External Affairs website. And the Hindu newspaper. The Hindu newspaper is one-stop solution. It is the best. Or if you do not have time, then you can go towards Insights. आप Insights की magazine पढ़ सकते हो. The Insights magazine you can always study, right? And the WTO, IMF, ये कहाँ से पढ़ना है? ये जो bodies हैं, UNO, इनके structure कैसे हैं? Obviously, Wikipedia will help you. Official websites of these organization will help you. WTO की official website से पढ़ सकते हो. But also again Insights. अगर आपको ये सारे झमेले नहीं करने हैं कि आप रोज एक एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके पढ़ो, बहुत टाइम लग जाता है, और भी चीजें कवर करनी है, टाइम कम है, देन इनसाइट्स मैगजीन इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? और यू कैन गो टुवर्ड्स देयर वेबसाइट सेपरेटली, इंडिविजुअली, ओके? नाउ हाउ टू स्ट्रक्चर एन आंसर इन जीएस पेपर 2. दिस इज एन एग्जांपल कि आपको जीएस पेपर 2 में आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है. फॉर एग्जांपल, वी आर टेकिंग दिस क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. The judiciary has played slightly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. यानी कि जुडिशरी कोर्ट्स जो होती हैं, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत की डेमोक्रेसी को डेवलप करने में. इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट इवैल्यूएट रोल प्लेड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म इन अचीविंग आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी. जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल क्या रहा है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अचीव करने में, राइट? नाउ हियर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट? नाउ वी दिस जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म इन हिंदी इट इज नोन एज न्यायिक सक्रियता, राइट? हिंदी में इसका मतलब होता है न्यायिक सक्रियता. बट वैसे एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग? सो लेट अस अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग. जुडिशियल एक्टिविज्म इट रेफर्स टू जुडिशियल रूलिंग्स. जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है? ये है आपकी जुडिशियल रूलिंग, यानी कि किस तरीके की रूलिंग जुडिशरी ने करी है, वर्डिक्ट्स पास किए हैं, दैट आर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन रादर देन ऑन एग्जिस्टिंग लॉ. देखो, फॉर एग्जांपल सेक्शन 377, राइट? फॉर एग्जांपल other important freedom of right, right to privacy, etc., freedom of speech, expression, right to privacy, etc. In these cases, sometimes judges have passed verdicts based on their personal opinions. For example, the Sabrimala issue, right? Sabrimala issue में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉ से हटके अपने पर्सनल ओपिनियन पे verdicts पास किए जाते हैं, राइट? तो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है कि आप कितना लॉ के हिसाब से काम कर रहे हो, बिना ये देखे कि ये चीज गलत है या सही, या लॉ पुराना हो गया है या हमें नए अमेंडमेंट की जरूरत है, और कितना आप खुद की थिंकिंग, खुद की एक्टिविज्म और खुद की ओपिनियन के बेस पे जजमेंट पास कर रहे हो, राइट? सो द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड स्पेसिफिक डिसीजंस दैट आर एक्टिविस्ट आर कंट्रोवर्शियल एंड पॉलिटिकल इश्यूज. कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म के बेसिस पे लिए गए डिसीजंस कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं. So here the question asks you to write about the working of Indian judiciary from the time the basic structure doctrine was proposed in Keshavananda Bharati case in 1973. So you have to write about judicial activism. The term is judicial activism. आपको बताना है ये क्या है. First you have to explain the examiner what is this, right? Because it's a new term. Then you have to tell about its strength. You have to discuss its weakness. इसमें अच्छा क्या है, इसमें नेगेटिव क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या है. डिफाइन जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ PIL. जो भी पिटीशंस फाइल की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती हैं, वो क्या होती हैं, राइट? एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल इंटरफेरेंस इन लेजिस्लेचर. Then after writing all these points, you have to talk about the separation of power of legislature, executive and judiciary, right? And in the long run, how they can be detrimental to the health of the constitution. This is how you have to
आंसर दी क्वेश्चन। इधर आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में ही समझाना है। यहाँ आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में ही पूछा गया है कि जुडिशियल एक्टिविज्म डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को कैसे फुलफिल करता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म को पूरा एक्सप्लेन करना है, उसके प्रोज कॉन्स सब कुछ लिखने हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर GS paper 2. So this was the book list. I am going to give you the link of this book list in the description box from where you can purchase it. I hope this was, understandable. If you have any doubt, you can ask me in the comment section.